So simply subscribe and press the bell icon and start my topic discuss about what is natural selection. Natural selection is the differential survival and reproduction of individuals due to differences in phenotype. It is a key of a mechanism of evolution. The change in the heritable traits characteristic of a population. Our generation, Charles Darwin, and popularized the term natural selection, contrasting it with artificial selection, which is intention, whereas natural selection is not. Variation of traits, both genotypic and phenotypic, exists within all populations of organisms. However, some traits are more likely to facilitate and survival and reproductive success. Thus, these traits are passed on the next generation. These traits can also become more common within a population if the environment that favors these traits remains fixed. If new traits become more favorable due to change in a specific niche, and in microevolution occurs if nutrients become more favored due to change in the broader environment, and macroevolution occurs sometimes new species can arise, especially if these nutrients are radically different from the traits possessed by their predecessors. The likelihood of these traits being selected and passed down are determined by many factors. Some are likely to be passed down because they adapt well to the environment. Others are passed down because these traits are actively preferred by matter, which is known as sexual selection, and female bodies also prefer traits that confer the lowest cost to their reproductive health, which is known as fecundity selection. And in natural selection is a cornerstone of modern biology. The concept of published by Darwin and Alfred Russel Wallace in the joint presentation of papers in 1858 was elaborated in Darwin's influential 1859 book on the origin of species by means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle for life. He described natural selection as analogous to artificial selection, processes by which animals with and plants with traits. वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का करम सर। ये देखेंगे नीचे क्या सब हो रहा है। ये जो मैंने पहले करवाया था, मैं कितनी देंगे दिखाइए सीबीसी सेम है, यूरिक एसिड भी है, ठीक है, बाकी शुगर नहीं हुआ। सर ये सीबीसी और यूरिक एसिड है बस जो आपका हुआ है इसमें। अच्छा, दूसरा काम बाकी ये एक इन्फेक्शन का बॉडी का, अच्छा, एक जोड़ों की दर्द का, अच्छा, और विटामिन डी का। विटामिन डी का इससे पहले मेरा ख्याल है शायद वो 3700 का सर। अच्छा, वो डिस्काउंट करके जो कार्ड होता है वो कार्ड 20% का, हाँ वो 2900। ठीक है, तो दूसरे ये दो टेस्ट आप करेंगे। हाँ बाकी ये 3 टेस्ट हो रहे हैं। सीआरपी भी वो जो जोड़ों की दर्द के लिए काम करता है। वो कितने हैं? ये सर आपके यूरो के सर तो जोड़ों के दर्द का लग गया है। वो तो एक दर्द हो ना या एडी की दर्द होल सिस्टम को शो करता था। चार आपके 7900 के बनेंगे, और
20% काट के 6320 के, यानी ये ESR आर फैक्टर CRP और विटामिन डी, यूरिक एसिड और CBC को भी मैंने ऐड नहीं किया। अच्छा बाकी कितने 3 बनते हैं? 4, 4, एक विटामिन डी, एक ESR, ESR वो किस चीज़ का? वो इन्फेक्शन का होता है, Infection बट का, दो। एक आर अफेक्टेड है और एक CRP, आर अफेक्टेड किस चीज़ का? वो जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा होता तो है। दूसरा तो जो चौथा जो है वो CRP वो मतलब जो जोड़ों की दर्द वगैरह होती है ना, उससे अगला फंक्शन वो बताता चलो है। ये करें फिर, ये 2 रहने देना दूसरे, CBC और यूरिक ये जो एसिड, होगा वो है। ठीक है। इसका तो कोई ना मसला, क्योंकि ये थोड़े दिन पहले हुए हैं। कितने टाइम पहले वैसे? 12 फरवरी। 12 फरवरी। हाँ